ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 81 of the Ayodhya Kandam, which has 16 verses. The king's bard, panegyrists, minstrels, having commenced eulogizing Bharata in the customary way in the midst of festal music at sunrise the following morning, Bharata stops it, disclaiming sovereignty and complains to Shatrughna of the ill turn done to the world by his own mother. In the meantime, sage Vashishta enters the royal court and sends messengers to Bharata, urging him to be present in court. And in response to his call, Bharata, accompanied by Shatrughna and the others, enter the assembly. आज हम एकाशीतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 16 श्लोक है। प्रातः काल के मंगलवाद घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ततो नान्दिमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः तुष्टुवुः सविशेषज्ञाः स्तवैः मंगलसंस्तवैः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अविशिष्ट देख स्तुति काल के विशेषज्ञ सूत और माघ दोनों ने मंगलमयी स्तुतियों के द्वारा भरत का सत्वंत आरंभ किया। Seeing the night preceding the Nandi Mukha and other festal ceremonies proposed to be performed by Vashishta preliminary to Bharata's coronation the following morning, approaching its end, the bards and the panegyrists, well versed in eulogizing kings and princes on special occasions, extolled Bharata by means of benedictory encomia. सुवर्ण कोणाभिहतः प्राणा दद्यामधुन्दुभिः दद्मुः शङ्कांश्च शतशो वाद्यांश्च उच्चा वचस्वरान्। प्रहार की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभि सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। Struck with a golden stick, the drum which was beaten at regular hours to notify end of every quarter of the day sounded loudly. Nay, the servants blew conches and sounded hundreds of musical instruments of various pitches. स तुर्यघोषः सुमहान् दिवम् आपूरयन् इव भरतं शोकसंतप्तं भूयः शोकैः अरन्दयत्। वादों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच से राधने लगे। Filling the space on all sides, as it were, that very loud sound of musical instruments, further oppressed with grief Bharata, who was already tormented with grief. ततः प्रबुद्धो भरतः तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नम् इदम् अब्रवीत्। वादों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, causing that music to be completely stopped the moment he was roused as a result of it, and saying that he was not the ruler, spoke to the celebrated Shatrughna as follows. पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्य अपाकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान उपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग लोक को चले गए। See, O Shatrughna, the great wrong that has been done to the world by Kaikeyi, and leaving a legacy of sufferings to my share, King Dasharatha too has departed from this world.
तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीः नौरिवा कर्णिका जले। आज उन धर्म राजा महामना नरेश की ये धर्म मूला राज्य लक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविका की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। This royal fortune, rooted in righteousness of that high-souled monarch, who was an embodiment of piety, is drifting like a boat without a pilot in water. योहि नः सुमहान् नातः सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा में राघवः स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलंजनी देकर वन में भेज दिया। Even the celebrated Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who was undoubtedly our very great protector and Lord, has been sent in exile to the forest by this very mother of mine, casting righteousness to the winds. इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तम् अचेतनं कृपणा रुरुदुः सर्वाः सुस्वरं योषितः तदा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फुट फुट कर रोने लगी। Perceiving Bharata lamenting as aforesaid in a distracted state of mind at that critical moment, all the women present in the gynecium piteously wailed at the top of their voice. तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभाम् इक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। While Bharata was wailing as mentioned above, the highly illustrious sage Vashishta, who was well versed in the code of conduct prescribed for kings, entered the court of King Dashratha, the ruler of the Ikshvakus. शातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्माम् इव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत। Accompanied by his host of pupils, the sage whose mind was given to piety got into the delightful council chamber, which was mostly built of gold and studded all over with pearls and precious stones of various kinds, and looked like Sudharma, the court of Indra, the lord of paradise. स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्याः तरण संवृतम् अध्यास्तवेज्ञो दूतान् अनुशशास च। The sage who had mastered all the Vedas occupied a seat of gold covered by a cloth bearing the design of swastika denoting good luck, and commanded the messengers as follows. So the tradition goes. वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था, उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और स्वर्ण में पीठ पर जो स्वस्ति आकार बिछौने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधान् अमात्यान् गणवल्लभान् क्षिप्रम् आनयथा व्यग्राः कृत्यम् अत्ययिकं हि नः। स राजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं सुधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष है वहां हो, उन सब को शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। Since there is some urgent business to be disposed of by us, please bring here promptly and quickly Brahmanas, Kshatriyas, warriors, ministers, troop commanders, Shatrughna and the illustrious Bharata, along with the other princes. Yudhajit, one of the chief counselors, nicknamed Vijaya,
and Sumantra, as well as all other people who are friendly to Bharata. ततो हलहाल शब्दो महान् समुदपद्यत रथैः अश्वैः गजैः चापि जनानाम् उपगच्छताम्। तदंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। A great noise then burst forth from the men approaching in chariots as well as on horseback and on elephants. ततो भरतम् आयान्तं शतक्रतुम् इव अमराः प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों ने, मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। The ministers and councillors as well as the people cheered Bharata coming to the council chamber as they used to the great Dasharatha, and even as gods would greet Indra, who is believed to have performed 100 Ashwamedha sacrifices as a condition precedent for his assuming the position of Indra. हृदय इव तिमिनाग संवृतः स्तिमित जलो मणि शंख शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा स दशरथेव बभूव सापुरा। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में शोभा पाती थी। Resembling a pool in the sea, having still waters and infested with timis, a kind of fish credited with a length and breadth of many leagues, and sea elephants, and full of gems, conches, and dust of gold, the aforesaid court, graced with the august presence of Bharata, son of Dasharatha, looked as it did when adorned with the presence of Dasharatha in the past. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 81तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 81 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।